Hello students, here I am Gargi Pawar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management program. So here I am back with an online lecture series on company account subject. So let's start with this. In today's topic, we are going to cover Accounting Standards 29. Okay. So then first of all, the name of Accounting Standard 29 is Provision, Contingent Liability and Contingent Asset. So basically, these accounting standards deal with the accounting treatment of provision, contingent liability, and contingent asset. So this accounting standard describes or tells us about the accounting treatment of these and also the disclosure requirement of provision, contingent liability, and contingent asset. Okay. So it is mandatory for every entity regarding its application, but level 2 and level 3 entities are given exemption from some disclosure requirements. So basically, this accounting standard is mandatory for every kind of applicable on every kind of business. So this accounting standard is mandatory for every entity, okay, regarding its application. So basically, this accounting standard will apply on every kind of entity. But level 2 and level 3 entities are given some exemption from disclosure requirement only. Okay, so level 2 and level 3 organization means medium scale organization and small scale enterprise. SMEs and MSEs, medium scale enterprises and small scale enterprises given some exemption from disclosure requirement only, not the relaxation from application. So this accounting standard will apply on every organization, every entity. But level 2 and level 3 entities are given some exemption for disclosure only disclosure requirement. Okay, तो उनको disclosure की केस में कुछ exemptions दी गई है, कुछ relaxations दी गई है, बाकी apply तो सबके ऊपर apply तो level 2 और level 3 के organizations पे भी होगा, but उनको कुछ disclosures की relaxation दी गई है कि आप इन कुछ items हैं उनको अगर disclose ना भी करो तो आपके लिए okay नहीं हुआ. So basically, accounting standard is mandatory for all kind of enterprises or all kind of entities. Okay. Now there is some definitions under this accounting standard. So let's have a look. Definition C. First, provision. What do you understand by provision? So see, it is a liability which can be measured only by using substantial degree of the estimate. So provisions are basically estimates of the future events or any future factors or whatever. So basically, provisions is liabilities. Provisions are liabilities. You have seen that the provision is always shown in liability side of the balance sheet. Provisions को हम हमेशा कहाँ show करते हैं, कहाँ record करते हैं, on the liability side of the balance sheet. So basically, provisions are the liabilities which can be measured only by using substantial degree of the estimates. तो ये provisions basically कुछ estimates हैं जिनका estimation हम पहले से लगा के रखते हैं कि ये expenses या इस तरीके की opposite situation हमारे साथ आ सकती है और उसका हम estimation amount का एक estimation लगा के जो record करते हैं, that is called provision. Okay? So this is basically in simple words, provisions are the estimates only. Okay? For future events or future expenses or future expenses. Okay? So it is the liability which can be measured only by using substantial degree of the estimates. Now, second term is contingent liability. So what do you understand by contingent liability? So in contingent liability, there is two terms, that is possible obligation and present obligation. So first, what do you understand by obligation? So obligations देखिए basically क्या होता है, ऐसी आपकी responsibilities जिनको आपको पे करना ही पड़ेगा. There is no other option other than payment. So ऐसी obligations, ऐसी आपकी responsibilities जिनको आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई other options नहीं है आपके पास कि आप उसको आप उसको compensate करवा लें किसी और चीज के थ्रू या ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे obligations, ऐसी responsibilities जिनको आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा सेटल करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं. These are the known as obligations. These responsibilities will be known as obligations. So first is possible obligation and second is present obligation. So these two terms are included in contingent liability. So what do you understand that possible obligation? So it is an obligation arising from past events which will be confirmed after the occurrence
obligations arising from past events, which will be confirmed after the occurrence or known occurrence of one or more uncertain events. So, what is exactly meaning? So, let's understand with an example. See, there is an obligation. So, first let me clear this definition or this content. See, ऐसी obligations जो आपके past events की वजह से arise है और ये obligation इन फ्यूचर होगी या नहीं, उसकी कंफर्मेशन कब आएगी, जब आपके फ्यूचर में कोई एक या एक से ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स अकर होंगे। तो इसका मतलब क्या देखिए, लेट्स हैव एन एग्जांपल। सी सपोज यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने किसी को अपने कस्टमर को कोई गलत क्वालिटी का कोई गुड्स बेच दिया, ओके, उस गुड्स की कॉस्ट थी suppose 2 lakh rupees the cost of that good which you sold to customer, okay, that was a defective quality, that was a defective product, okay, so अब क्या होगा कि वो कस्टमर आपके ऊपर क्लेम करेगा, ओके, तो वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा। नाउ ये जो ऑब्लिगेशन है उसने केस फाइल किया कि दैट you have to pay 3 lakh rupees as compensation to me, आपको 3 लाख रुपीस कंपनसेशन मेरे को देना पड़ेगा। तो अब आपका केस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ओके, नाउ आपकी वो ऑब्लिगेशन तो है, आपको पे तो करना पड़ेगा। हो सकता है 3 लाख ना पे करके कुछ कम करना पड़े, या हो सकता है कुछ भी ना करना पड़े, एक्चुअली कुछ भी ना पे करना पड़े, ये भी पॉसिबल, ओके। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। तो पास्ट में आपके इवेंट हुआ, पास्ट में आपने सेव करी, उसकी वजह से ये कंडीशन, ये इवेंट अकर हुआ है, अराइज हुआ है, which will be confirmed after the occurrence or known occurrence of one or more uncertain future events. तो फ्यूचर में कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी तो ऑब्लिगेशन है कितनी, पे तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, ओके। आपने अपने लॉयर से बात करी और लॉयर ने बोला कि आपको पे तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने डिफेक्टिव क्वालिटी का माल उसको दिया है, तो पे तो हमको डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है हम अगर केस लड़े इसके लिए तो हो सकता है हमको थोड़ा कम अमाउंट पे करना पड़े। तो एक्चुअली आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है, दिस इज नॉट डिफाइंड हियर, दिस विल बी डिफाइंड आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ओके। तो पास्ट इवेंट हुआ कि आपने सेव करी, उसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई, और ये होगी या नहीं होगी इसका कंफर्मेशन कब आएगी, फ्यूचर में कोई इवेंट होने पे, मतलब फ्यूचर में कोर्ट का डिसीजन आने के बाद आपकी ये ऑब्लिगेशन। So this is called possible obligation. Now second term is present obligation. So it is such an obligation which has arisen from past event at the same time, but it is not recognized because it is not probable that any outflow of resources will be needed to settle such obligation, and it is not possible to estimate its amount realization. So प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी सेम है कि आपके पास्ट इवेंट्स की वजह से अराइज हुई है, लेकिन आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि उससे आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, इसके चांसेस नॉट प्रोबेबल है। नॉट प्रोबेबल मतलब, प्रोबेबल का मतलब होता है अगर आपको उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है तो प्रोबेबल, मोर देन 50% नहीं है तो नॉट प्रोबेबल, ठीक है। तो आपकी इसकी वजह से, इस इवेंट की वजह से आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, ये इसके चांसेस अभी 50% से कम है। इस वजह से आपने अभी तक वो ऐसे इवेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है रिकॉर्ड करना, ओके, तो आपने रिकॉग्निशन उसका नहीं करा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सच अमाउंट रियलाइज। या ये भी हो सकता है कि आप एग्जैक्टली उसका अमाउंट ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, एस्टिमेट लगा ही नहीं पा रहे हो कि क्या उसका एस्टिमेट अमाउंट होना चाहिए, ओके। तो इन दिस कंडीशन that obligation will be known as present obligation. So contingent liability में हम possible obligation और present obligation को include करेंगे, okay. Now let's understand with an example present obligation. See, अभी हमने बात करी कि हमने 2 लाख रुपीस का गुड्स बेचा जो डिफेक्टिव था। अभी हमको पता है कि हमने 2 लाख रुपीस का गुड्स बेचा, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में और पास्ट ऑब्लिगेशन में, पॉसिबल ऑब्लिगेशन में फर्क कितना है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन में आपको अमाउंट एस्टिमेट होता है
कि इतना अमाउंट हो सकता है, बट रिजल्ट ऑब्लिगेशन में आपको अमाउंट का कोई भी एस्टिमेशन नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट ऑब्लिगेशन। सपोज लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया कि हमने 2 लाख रुपीस का गुड्स बेचा। नाउ अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने गुड्स बेचा, कितने का बेचा, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, अभी तक कोई डील हुई नहीं है, जिसको भी आपने गुड्स बेचा वो आपकी एक परमानेंट कस्टमर था, आप एक इंडस्ट्रियल कस्टमर था, जिसका जिसका आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसके कितना अमाउंट आप कितना पैसा आप उनके मांगते हैं, और ये सब चीजें आप एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट करते हैं। जैसे डेली बेसिस पे अगर हम बात करें, डेली बेसिस पे अगर जैसे कुछ ऐसा लोग होते हैं कि जो आपने जनरली देखा होगा, दो शॉपकीपर्स अगर हैं तो वो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अगर एक की शॉप पे कोई चीज नहीं मिल रही तो जल्दी से जाके दूसरे से ले आता है। नाउ एट दैट टाइम आपको उसका एस्टिमेशन नहीं है कि हमको कितने रुपए में देगा। आपका क्या होता है, आपके शॉप पे कस्टमर खड़ा है और आपको पास शॉप पे लाके वो चीज देगी कस्टमर को, तो आपका एस्टिमेशन नहीं है उसका कि वो हमारे कितना कॉस्ट लगाए, वो चाहे जितनी कॉस्ट लगा सकता है, एक्चुअली तो होता नहीं है, बाकी कॉस्ट आपके उस वक्त डिफाइन नहीं है कि वो आपको कितने रुपए में वो देगा, ओके। तो these type of events obligations will be known as present obligations। ऐसे obligations जो past events की वजह से अगर हुए हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई आपके आउटफ्लो, मनी में आउटफ्लो या रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, वो नॉट प्रोबेबल, मतलब इसके चांसेस 50% से कम है, एंड इसका अमाउंट एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड present obligation। Now, what do you understand by contingent assets? So, any possible assets arising from past events, but existence of which will be confirmed after occurrence and known occurrence of one or more uncertain future. So, the minor difference between contingent assets and contingent liabilities definition is possible assets. There was possible liabilities. Okay, or here only one word is different. That is any possible asset arising from past events, but existence of which will be confirming in occurrence and known occurrence of one and more uncertain future events. Okay, so these will be known as contingent liabilities. Now have a look on present obligation and possible obligation, although we have discussed earlier, but let's see one more time. What is present obligation? Any obligation or obligation, the existing of which on balance sheet date is probable, more than 50% chances on the basis of evidence available. So present obligations कौन सी obligations होगी, जिसका बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट, इसका बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्टेंस क्या है, प्रोबेबल है। प्रोबेबल है मतलब नॉट मोर देन 50% चांसेस है, इज नॉट प्रोबेबल है, ओके। प्रोबेबल मतलब चांसेस इज मोर देन 50%, राइट। तो प्रोबेबल होने बैलेंस शीट डेट पे वो एग्जिस्ट करती है ऑब्लिगेशन, इसके चांसेस कितने हैं, मोर देन 50%, okay, so that will be called present obligation। And what is possible obligation? Any obligation the existence of which on balance sheet date is not probable on the basis of evidence available। जो भी आपके evidences available हो उनके basis पे आपको ये evidence की basis पे अगर आपके obligation के existence के chance balance sheet date पे 50% से कम है, that is not probable। तो नॉट प्रोबेबल है अगर कोई आपकी ऑब्लिगेशन that obligation is known as possible obligation। Okay, so this is the one more difference between present obligation and possible obligation। Now see the recognition and measurement of provision। See recognition and the measurement department of the provision। How will you recognize the provisions? Provisions को आप recognize कैसे करेंगे और कब करेंगे? Recognize means record करना। So provision will be recognized only when all the following conditions are satisfied। आप provisions को तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर आपकी जो following conditions है वो fulfill हो जाए। There must be a present obligation on balance sheet date arising from past events। So on present date on the balance sheet date, the obligation must be present there. Then only you can make the provision or you can record that provision. Okay. Next, it is probable that outflow of resources will be there to settle such obligation। So there is probable that the outflow of resources will be there to settle such obligation। So to settle that obligation, there will be outflow of resources, chances of it should be more than 50%। तो आपके इस obligation को settle करने की वजह से आपके resources का outflow होगा। आपके यहाँ पे resources may be cash or in kind।
वर्ड मेंशन विद प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%. ओके, सो अगर आपके आउटफ्लो होने का चांसेस इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने की वजह से आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, इसके चांसेस कितने हैं, मोर देन 50%, देन you can record that provision or you can recognize that provision. Okay, then next amount can be estimated reliably. If you can estimate that amount of provision, then you can record or you can recognize that provision amount. Okay, आपको अगर प्रोविजन का अमाउंट आप एक रिलायबल तरीके से एस्टिमेट लगा पाते हैं, तो रिलायबली फैक्टर्स हैं आपकी जिनकी वजह से आप उसका अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं, देन यू कैन गो दैट. ओके, yes, now see, measurement of provisions. So how will we measure the provisions? So let's see. Yes, amount of provision must be based on best judgment applied on the basis of information, evidence and available. So how will you measure the provisions amount? तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, एविडेंसेस अवेलेबल है, उनका बेस्ट जजमेंट करके, बेस्ट जजमेंट उनके ऊपर अप्लाई करके आपको प्रोविजंस का अमाउंट मेजर करना है या एस्टिमेट लगना है. Then uncertainties and risk must also be considered. तो आपको रिस्क और अनसर्टेनिटीज को भी कंसीडर करना है व्हेन यू विल मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोविजन. ओके, देन नेक्स्ट, प्रोविजन मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट हैज बीन मेड. तो आप जब प्रोविजन का अमाउंट मेजर करेंगे तो उनमें से सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को लेस करेंगे जिनका यूज आपने उस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए किया है, जिसके लिए उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया है, जिस पर्पस के लिए आपने प्रोविजन बनाया था. सपोज इफ यू मेड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, that then in that case you can only use these provisions of bad debts, not you can use them on depreciation. Okay, or suppose let's have another example. If you made provision of doubtful debts on a customer, that is the name of customer is Ram. Okay, एक कस्टमर था राम, जिसके ऊपर आपने प्रोविजन बनाया कि आपको लग रहा था कि इसमें ये हमारा अमाउंट रिटर्न नहीं करेगा, इसका जो सेल्स का अमाउंट है ये अमाउंट रिटर्न नहीं करेगा, जबकि कि बैड डेट्स डिक्लेयर होने वाले हैं. तो आपने इसके लिए प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन को डाउट, तो आपको डाउट था कि पैसा रिटर्न नहीं करेगा हमारा, तो आपने प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स बना दिया. नाउ राम ने तो आपको पैसा दे दिया, लेकिन एक अदर कस्टमर है शाम जो बैड डेट्स होते हैं, बट आपने प्रोविजन किसके लिए बनाया था, राम के लिए. तो अगर आप उस प्रोविजन का यूज राम के लिए करोगे तो ही आप उसको कंसीडर करोगे, मेजरमेंट में कंसीडर करोगे. अदरवाइज अगर आपने उसका यूज शाम के लिए कर लिया तो फिर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको पूरे प्रोविजन को कंसीडर करना पड़ेगा. दैट मींस जो प्रोविजन का अमाउंट आप एट द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे, उनमें से सिर्फ उन्हीं प्रोविजन के अमाउंट को आप लेस करेंगे जितना आपने प्रोविजन बनाया है, उनमें से उसी प्रोविजन के अमाउंट को लेस करेंगे जो आपने यूज किया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए आपने प्रोविजन बनाया है. ओके, ऐसे अगर आपने किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया है उस प्रोविजन को, तो आप उस अमाउंट को लेस नहीं करेंगे प्रोविजन के टोटल अमाउंट. ओके, yes. Then if there is any profit on disposal of any asset, then such profit will not be considered for calculating of amount of provision. If you earn any profit from disposal of assets, then in that case you will not calculate or consider that amount in calculating of amount of provision. Suppose you made any provision for assets. आपने एसेट्स के लिए प्रोविजन बनाया और आपने एक दूसरी एसेट बेची जिसके डिस्पोजल के आपको कोई प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट का उस प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है. तो आप एसेट्स का जो डिस्पोजल करोगे उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होगा और आपने एसेट्स के ऊपर प्रोविजन बनाया था, तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों को आपको सेपरेट सेपरेट करना है. प्रोविजन का अमाउंट सेम ही रहेगा जो आपने बनाया था, उतना ही आपको रिकॉग्नाइज करना है. जो प्रॉफिट हुआ डिस्पोजल से उसको आपको एडजस्ट नहीं करना है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रोविजन. Then if some portion of provision is recoverable from other person, then such recovery will adjust only when it is virtually certain 100% sure. See, आपको आपकी कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है जिनको आपको पे करना है, कैश में पे करना है या बैंक में पे करना है, आपको सेटल करना है, उस अदर किसी पर्सन को आपको पे करना है. वो अमाउंट अगर आपको किसी अदर पर्सन से रिकवर हो जाता है तो आप उस अमाउंट को तभी रिकवर कर सकते हैं जब वो क्या हो, when it is virtually certain. What is the meaning by virtually certain? 100% आपके पास श्योरिटी हो कि वो अमाउंट रिसीव होगा. सपोज आपका एक एम्प्लॉई है जिसके आपके यहाँ काम
कंपनसेशन देना पड़ेगा। और वो कंपनसेशन आपने उसके लिए एक इंश्योरेंस करवा रखा था, अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस करवा रखा था, और आपको इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट आपको देगी जो आपको कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको श्योरिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी को आपको अमाउंट देगी, तो आपको वो एडजस्ट करना है प्रोविजन में से, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एडजस्ट दैट अमाउंट और दैट अमाउंट विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इफ इट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन। अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है 100% श्योरिटी है तो आपको एडजस्ट नहीं करना, आपको 100% श्योरिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको अमाउंट मिल जाएगा कंपनसेशन का, देन ओनली यू कैन एडजस्ट दैट अमाउंट। ओके, the next is provision will not be made for discounted value. See, provisions हम किस पर बनाएंगे, जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसका। तो बेसिकली ये लोगों का एस्टिमेशन होता है, सब लोग ये सोचते हैं कि जो प्रोविजन बनाया जाएगा तो उसकी आज की जो वैल्यू है उस पर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। प्रोविजन किस पे बनाया जाएगा, सपोज यू आर मेकिंग प्रोविजन फॉर 6 years, तो 6 years के बाद उसकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर प्रोविजन बनाया जाएगा, नॉट ऑन प्रेजेंट वैल्यू को कभी भी प्रोविजन नहीं बनाया। ओके, प्रोविजन विल नॉट बी मेड आफ्टर कंसीडरिंग टैक्स सेविंग। सपोज आप जो भी एक्सपेंस करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स की सेविंग होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोविजन जब बनाएंगे तो टैक्स सेविंग वाले एक्सपेंसेस के लिए जिसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, उस एक्सपेंसेस पे जो सेविंग टैक्स की सेविंग होने वाली है उसको आपको लेस नहीं करना है। ओके, विल नॉट बी मेड आफ्टर कंसीडरिंग द टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग को आपको कभी भी लेस नहीं करना है प्रोविजन में। Then we will review the provision on every balance sheet date. It will be increased, decreased, or reversed depending upon the review situation. So आपको every balance sheet date पे आपको अपने provisions का review करना है, और अगर वहाँ पे requirement है आपको increase या decrease करने की, तो आप reverse entry करके उसको decrease कर सकते हो, same entry करके उसको increase कर सकते हैं depending upon review situation. Okay, so these are the measurements of provision. These are the rules for measuring the provision. Okay, now you will say कि मैम फिर हम हमारी मेजरमेंट की कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स की मेजरमेंट की क्या कंडीशन है। उनकी कोई कंडीशंस नहीं होगी क्योंकि उनको हमको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी को हम एक नोट बना के बैलेंस शीट के नीचे एक नोट बना के हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स, बस इतनी ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी की। ओके, yes, contingent liability will be disclosed in notes to accounts. Okay? The probability of outflow resources is removed and no need of any disclosure. आपको contingent liability को कहाँ दिखाना है? You have to disclose in notes to accounts. बैलेंस शीट में आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के आपको contingent liability को बेसिकली शो करना है। ओके, और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है आउटफ्लो होने की, इन लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए अगर आपके रिसोर्सेज के आउटफ्लो होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रिमोट है, रिमोट मतलब बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो फिर आपको इन कंटीजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं। So then there is no need to disclose any contingent liability if the probability of outflow of resources is remote. Remote means there is a few number of liabilities, few number of probabilities exist there. Okay. Then next is contingent assets. So no disclosure is made in financial statement. So contingent assets के लिए आपको कोई भी disclosure नहीं करना है financial statement. Okay. If inflow of resources is probable, then it will be disclosed in board of directors. अगर आपको ये लगता है कि इन एसेट्स की वजह से आपके रिसोर्सेज का जो इनफ्लो होगा उसकी चांसेस कितने हैं, प्रोबेबल मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है आपके रिसोर्सेज के इनफ्लो होने के, देन इन दैट केस you have to disclose these contingent assets in board of directors report. Okay, and what is third condition? Contingent assets will be recorded as normal assets if inflow of resources is virtual certain. अगर आपके किसी contingent assets की वजह से आपके इनफ्लो रिसोर्सेज में इनफ्लो होने के चांसेस कितने हैं, 100% श्योर है, 100% श्योरिटी है, virtual certain है, then that contingent assets will be recorded as
these are the disclosure requirements of provision. Provision के disclosure में आपको ये items okay. So this is all about your accounting standards 29